सर सर्वर स्लो है सर, शायद स्लाइड को शेयर करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सोचा करो कैसा हो रहा है, कैसे ठीक हो सकता है। हेलो सर स्लाइड शेयर करने में सर थोड़ी जो ऑप्शन है सर वो क्लिक करने पे नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था पिछली क्लास में भी कि जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन सर शो नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है आने में। ओके ओके तो सर जस्ट आई एम वेटिंग सर, उस पे मैंने क्लिक किया है एमएस टेम पे। वैसे मेरा नेट कनेक्शन वाईफाई पे है, एकदम अच्छे से चल रहा है ब्रॉडबैंड पे। ठीक है, कनेक्शन में जी जी सर्वर जी यहाँ तो सही चल रहा है। सर यहाँ पे नहीं ओपन हो पाया सर। मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से मैं ज्वाइन करूँ क्या एक बार? अगर यस शेयर कंटेंट का अब आ गया सर। कर रहे हैं सर, आपका कंटेंट नहीं आ रहा अभी। सर कंटेंट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, शेयर वाले ऑप्शन पे ऑप्शन आ गया, उस पर क्लिक किया, वो घूम रहा है अभी शेयर करने में। कंटेंट मैंने ओपन कर रखा है सर, ये सर्वर में ही, माइक्रोसॉफ्ट टीम के सर्वर में ही। लास्ट क्लास में भी सर मैंने ये इशू फेस किया। या तो सर्वर स्लो है सर कुछ, आई डोंट नो। पिछली क्लास में सर कंटेंट शेयर हो गया था, पर बीच में फिर से उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से ओपन करने पे नहीं हो पा रहा था। नंदन जी जी सर, आप कंटेंट शेयर करेंगे क्या? सर मैंने शेयर कर रखा है। मेरी आवाज सर आपके पास जा रही है, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है सर। नेट कनेक्शन एकदम अच्छा है, सर्वर स्लो है सर शायद। मैंने कर रखा है कंटेंट शेयर, वो घूम रहा है सर गोल गोल। हमारे हाइड जहाँ पे शेयर ऑप्शन आता है वो वाला अभी सफर। जी बोलिए सर, हमारी तरफ से तो ओके रिपोर्ट है, आपकी तरफ से हो सकता है कि नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही हो सर। सर। नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, स्क्रीन आ गई है, ये देखिए स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया है, और स्क्रीन के बाद आप कहेंगे तो मैंने पूरी की पूरी स्क्रीन ही शेयर कर दी। प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है सर, इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। यहाँ तो सर्वर में हाँ, तो सर ये थोड़ा सा वेट करिए सर 1 मिनट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ सर, एक बार फिर से कर रहा हूँ, प्लीज वेट सर। थोड़ा पिक्चर आई है थोड़ी सी, देखो आप करो। आई है सर, आ गया। विजुअल नहीं है ना आपका कंटेंट, अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ अब आया। हाँ कर, अब आ गया ठीक है सर, आ गया है ना, बच्चों को दिखेगा इस। हाँ जी हाँ जी आ गया। हाँ मैं स्टार्ट कर, ठीक, थैंक यू सर। Okay, good afternoon all the students present here. Today I am going to take your class on unit 5th, that is environmental pollution. Environmental pollution के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। So basically environmental pollution is introduction of contaminant to the environment. Environmental pollution का जो basically definition है वो introduction of contaminant to the environment है। That means any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of the air is called as a air pollution.
ठीक है, एनी अनडिजायरेबल चेंज जो कि हार्मफुली अफेक्ट करता है फ्लोरा एंड फना को, प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, सो स्टूडेंट आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर होंगे अब वो आप लोग वहां पे लिख देना, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लूंगा साथ में। ठीक है, सो व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस contaminate the environment is called as a pollution. It can be defined as any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of any component of the environment which can cause harm to life and property. Okay, so basically how many types of pollution and pollutants are introduced into the environment? ठीक है, पहला है हमारा एयर पोल्यूशन, सेकंड इज वाटर, मैराइन, थर्मल, सॉइल, नॉइज, न्यूक्लियर। Okay, so these are the basic pollutants and pollution which are affecting our biosphere badly. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। बेसिकली एयर पोल्यूशन डिफाइंस एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर व्हिच आर बैडली अफेक्टिंग आवर flora and fauna, plants and animals, okay, and our environment. Okay, up as you know that atmosphere is differentiated into the 4 spheres: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, okay, or thermosphere, where pollution or pollutants are affecting very much in tropo and stratosphere. Troposphere में आप देख सकते हो 6 to 8 किलोमीटर यहाँ पे pollutants बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, I will discuss about this too in detail. Okay, as we know that basically we are taking oxygen और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, yes, ठीक है, so in the pictorial diagram you can see that nitrogen is the most abundant gas present on the Earth's surface, that is 78.1%. okay, second fraction is for the oxygen, that is 20.9%. okay, then argon, carbon dioxide, others, etc etc. okay, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 20.9% ही अवेलेबल है। okay, basically air is a mixture of different gases. Human activities can release substances into the air, some of which can cause problems to humans, plants and animals. okay, सो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है ये एयर का कि एयर क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, फिर एयर पोल्यूशन की बात आती है, एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन व्हिच कैन कॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन मैन एंड इन हिज एनवायरनमेंट। ओके, सपोज आई एम टेकिंग अबाउट, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि we can take 2 glass of water. We can take 2 glass of water. Our capacity is to take 2 glasses of water. If we take 5 glasses immediately, then क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही there is a quality parameter कि एयर में जब इस गैस का कंडीशन या अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो that will create air pollutants, that will create air pollution and hazardous effect. ठीक है, क्या hazardous effect होगा उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ओके, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस हैं जो पोल्यूटेंट्स में आते हैं? दे आर NOx, SOx, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं उसमें, डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, radioactive waste, etc. okay, so this is something about air pollution. What is air pollution and what is the example of air pollution? If you अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि ये एग्जांपल है एयर पोल्यूशन का। डिफिनेशन में जस्ट यू इन द पोल्यूशन चैप्टर जस्ट रिमेंबर these words: any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of the air is called as air pollution. जब वाटर का होगा तो वाटर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, so basically 2 kind of sources are there. One is natural, another is anthropogenic means man-made sources. Okay, where the fraction of anthropogenic pollutants are much more higher in comparison to natural sources. Okay, so just see what are the anthropogenic sources: thermal powered plants, vehicular emission, industrial units. Our population is increasing day by day. Okay,
So our demand is also increasing, because if population is increasing, we need more food, we need more shelter, we need more table chair to sit, we need more natural resources to consume. Okay, so what we are doing for the agricultural, we are increasing agricultural practices, cutting the trees, forest area को कट करके agricultural land बना दिया. अब वहां पे क्या होगा कि forest area कट गया, we are basically taking oxygen through our respiration and exhaling what? Carbon dioxide. And if the carbon dioxide concentration is much more, is increasing, then what it will create? Global warming. कैसे? Carbon dioxide will absorb the heat. जो सन से हीट आती है और रिफ्लेक्ट बैक एटमॉस्फेयर में हो जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? यहाँ पे the earth's surface gets heated up by a phenomena that is called as a global warming. So when the earth's surface gets heated, that is called as a global warming. तो global warming को create कर देगा. But if plant है, forest area है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाएगा. In so many countries जहाँ पे प्लांट, जैसे भूटान की हम बात करते हैं, वहाँ पे प्लांट स्पीसीज बहुत है, प्लांट बहुत कम काटे गए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ वो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है. ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी है. ओके, वैसे ही ये हो गया एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के बारे में. वैसे ही हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. सम ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर. इन एवरी ईयर फॉरेस्ट फायर हिट इंडिया एट सो मेनी प्लेसेस. लाइक इन, जैसे अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ था, मसूरी के आसपास कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ था. फॉरेस्ट फायर में क्या होता है? फॉरेस्ट जल जाता है, उसके थ्रू जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं. ओके, देन बायोलॉजिकल डिके, टर्पीन्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट दिस स्लाइड shows something about what are the sources available and what kind of sources which are affecting our environment and producing air pollutants. ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट दो टाइप से सोर्सेज हैं, एक है नेचुरल, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक या मैन. So just see here the pictorial diagram. You can see the industrial effluent and industrial air pollutants are bigger and much more in comparison to other sources. Where in transportation sector is on number 2. Okay. Third is consumer and commercial products, agriculture 10% and 2% for the other. Okay. So you can see industry is, and industrialization is our basic need. We cannot think about our life without industrialization, because industry is giving everything. Our food processing industry, textile industry, our cloth, okay, aviation industry to fly somewhere to somewhere, okay, automobile industry, bike and cars, etc, etc. So these are the industrial stuffs, are industrial establishment which are producing maximum air pollutants into the atmosphere. Just see here in the figure, cars, trucks, buses, motorcycles, these are all industrial units. Aeroplane, industrial units, stationary industry, power plant, sewage treatment plant, etc. Okay, pollutants are emitted into the atmosphere. Okay, and just see here, forest fire. There are some little bit and a little amount of natural causes are present, like volcanoes, wildfire, forest fire, lightning, etc. Okay, so this is something about the pollutant emission from the sources. So what amount of pollution sources are emitted is shown here. The next slide, the category of pollutants emitted through the source. There are two kind of sources. We can categorize air pollutants into the two categories. First is primary, other is secondary. There is a one basic difference in between them. Primary pollutants are emitted directly from the source. Like if we are using our automobile, if we are using our bike or car, the pollution emitted are primary pollutant. When the pollutants like carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide enters into the environment, they combine and produce some secondary pollutants, okay, that cause acid rain, precipitation less than 6 pH,
Okay, that is very harmful for our body, for plant, for animals. Okay, so in this slide, what is primary pollutants and what are the secondary pollutants? This is shown and some of the examples. Kindly note down the examples of the primary pollutants and secondary pollutants. Okay. This is the classification of air pollution, and here I told about the sources. There are two kind of sources. One is natural, another is anthropogenic. Okay, and when we classify the pollutants, air pollutant, we can classify into two. One is primary pollutant, and another is secondary pollutants. Okay. So name of the gases. In this slide, you can see the criteria of pollutants which are present into the atmosphere. Name of the gases, its characteristics, and the sources. Okay. Some of the main gases and main air pollutants are nitrogen dioxide, ground level O3, ozone, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, CFC, and lead. Okay. And what are the sources for nitrogen oxide? Basically, in most of the cases, the pollutants are emitted from the automobile exhaust or burning of fossil fuel. जो बर्निंग होता है फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, कोल का, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं. ठीक है. Student waits, I'm facing some error with the server. Okay, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लिखना, अभी मैं उसको लेता हूँ. ठीक है. Let me check some question and answers are coming. स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, ड्यू टू सर्वर एरर ये लेट कर रहा है. चलिए मैं आपका स्लाइड पहले शो करता हूँ, फिर उसके बाद क्लास लेते रहते हैं. जैसे ही वो ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, जैसे ही वो आ गया, मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लूंगी. ठीक है. Okay, I hope all of you are able to see here. Okay, so carbon monoxide, third, carbon monoxide. This is also emitted from the incomplete burning of carbon-based fuels and natural and synthetic products such as cigarette. जैसे सिगरेट स्मोकिंग है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालता है. उसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, कोल है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है. ओके. Then carbon dioxide emitted as a result of human activities such as burning of coal, oil and natural gases. Then sulfur dioxide की हम बात करेंगे. Form when fuel, coal, oil. So you can see here in most of the cases, burning of fossil fuel, which is burning of coal, burning of petrol, burning of diesel. This is the main source of all pollutants into the atmosphere. Okay. CFC released from air conditioning system and refrigeration. Lead का क्या होता है? Present in petrol, diesel, lead, batteries, paints, hair dye, etc. Okay, they are also affecting some of the they have some kind of characteristics and also affecting us badly. Like carbon monoxide is the principal greenhouse gas. Okay, sulfur dioxide, the precursor to acid rain. It caused acid rain. It formed secondary pollutants that produce acid rain into the atmosphere. Okay, then CFC जो प्रोड्यूस करता है ओजोन डिप्लीशन को. ओके, सो देयर आर क्राइटेरिया, सम क्राइटेरिया ऑफ द पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. इंडोर एयर पोल्यूशन. बिफोर गोइंग इन दिस इन डिटेल, लेट मी चेक इफ योर क्वेश्चन आंसर अपीयर्स हियर. अगर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो
स्टूडेंट्स आई एम नॉट एबल टू ओपन द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, फिर जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, मे बी मुझे लग रहा है कुछ सर्वर एरर है, क्योंकि जैसे ही वहां पे मैं जाता हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है। ओके, सो इंडोर एयर पोल्यूशन, मैं एडमिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर सर थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, तो काइंडली वेट फॉर योर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टूडेंट। इंडोर एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द इंडोर एयर पोल्यूशन? मेनी पीपल स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम इंडोर्स, एज मच एज 80 to 9% ऑफ देयर लाइफ। वी वर्क, स्टडी, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप। अभी देखिए, लाइव एग्जांपल ये है कि इन द विंटर सीजन we usually use blower and heater in our rooms। रूम को हम लॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा भी एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। एंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एयर सर्कुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रूम में क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ेंगे। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि रूम को थोड़ा सा वेंटिलेशन, थोड़ा सा हमको एयर का सर्कुलेशन देके सोना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्यों? चिल्ड्रन, वुमेन मोर एक्सपोज टू रिस्क रेडान गैसेस हैं, बर्निंग ऑफ डंग केक्स और फ्यूल, वुड, केरोसिन। केरोसिन को हम जलाते हैं घर में, वो भी विलेजेस में जलाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। इनकम्प्लीट कंबशन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ एनी काइंड ऑफ थिंग इज इनकम्प्लीटली, जब वहां पे इनकम्प्लीटली कंबसन होता है, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन में कंबसन होता है, तो वो भी प्रोड्यूस करता है। सिगरेट स्मोक की हम बात करेंगे, सिगरेट स्मोक की बात करते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो यू कैन सी हियर अ पिक्चोरियल डायग्राम वेयर यू कैन सी द हाउ इंडोर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग अस, लाइक कंबसन गैसेस फ्रॉम फायर प्लेसेस, वुड बर्निंग स्टोव घर में लगे होते हैं। ठीक है, फिर इधर पे आप देखिएगा chemical fumes from paints and solvents, gases including radon seeping through foundation। cigarette smoke हो गया, carbon monoxide fumes from the attached garage। जैसे हमारा गैरेज होता है, वहां पे हम गाड़ियां रखते हैं या कुछ होता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, सो दिस इज द पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ एयर पोल्यूशन, हाउ दे आर अफेक्टिंग अस। ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए फिर से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज वेट। स्टूडेंट, मैं आप लोगों का क्वेश्चन शो नहीं कर पा रहा हूँ, ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है। ओके, सो अभी हम स्लाइड पे रहते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, उसको फिर से मे भी कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नॉट फ्रॉम द टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम हमको सपोर्ट करने के लिए होती है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी नेट के थ्रू या कुछ टेक्निकल ग्लिच आ ही जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी। आप लोगों का जो भी अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है, आप लोगों की क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में भी लूंगा। Okay, so how the air pollution affecting us? How the air pollution is affecting us? Okay, it affects human health, it affects animals, plants को भी affect करता है, materials में डालता है, environment पे जो डालेगा। Okay, so how air pollution is affecting our human health? Main problems are related to respiratory tract, asthma, fever and other allergic diseases. ठीक है, other allergic diseases, as we know, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बेसिकली इनिशिएट एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में गवर्नमेंट बात करती है। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होगा,
Students, I am taking your question answer. आप लोगों का क्वेश्चन आंसर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है. आई हैव अ गुड नेट कनेक्शन बट आई कैन. ओके, वेट. आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ओपन हो गया. सोनू, गुड इवनिंग सर. प्रियंका, क्लासेस का ओके ग्रुप है. सोनू, अभी कोई ग्रुप नहीं बना है. काइंडली आस्क टू एडमिन सम एग्जाम. For these kind of administrative questions, you can ask to some administrative persons exams and all. सर अपना नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे. नो आकाश, अब एसओएल की साइट पे जाना, वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है जो स्टडी मटेरियल है. यू कैन इजिली फाइंड आउट देयर. ओके सर. बीएसटी क्यों? पूनम सिंह, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है, बाकी मैं बोल दूंगा एडमिन को. बाकी जब आपको तो अगर कुछ वहां से इमीडिएट बोलते हैं तो बना सकते हैं. देवान सिंह डोगरा सर, फॉरेस्ट फायर के सर. So much for time. I have not took class and right now I am added to any group. May I get any of group link? साक्षी, there is actually there is no group. आप लोगों का जो SOL से मटेरियल प्रोवाइडेड है ना, वो आपको पूरा इंटरनेट में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द गूगल. एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर ऑन द SOL वेबसाइट. SOL की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. उसमें आपका स्टडी मटेरियल में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. सो यू कैन सी देयर. ओके, हिंदी इंग्लिश मटेरियल बोथ है. सो यू कैन सी देयर एज पर द सिलेबस. वो आपका पूरा दिया हुआ है. आपको ज्यादा टोटल साक्षी 7 यूनिट्स है, जिसमें अभी 5th यूनिट चल रही है. ठीक है सर. आई हैव यस मुस्कान, इज नेसेसरी एक्चुअली. जो आपका क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन गैसेस एंड सोर्सेस. आपका सोर्स कितना होगा? सोर्स दो टाइप का है. ठीक है, एक है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, एक होता है मैन, एक होता है आपका नेचुरल सोर्सेज. एंथ्रोपोजेनिक जो डिक्टेट करता है वो शो करता है मैन मेड सोर्सेज को. ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में जाए, किसी भी पोल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन में जाए, मे बी यू आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, आल्सो देयर आर 2 काइंड ऑफ सोर्स. वन इज नेचुरल, अनदर इज मैन मेड. ओके, तो 2 सोर्सेज है, वो आपको हर जगह पे डिस्कस करना है. ओके साक्षी, मैं आपकी क्लासेस जैसे ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हो. जहां पे भी कोई इशू आता है, अभी के लिए आप गूगल पे जाके SOL की वेबसाइट पे जाके बुक्स देख लो, वहां पे अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी. उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से आस्क कर सकते हो. यस रोहित, आई एम आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम. रुक रुक के रोहित, मे बी कुछ नेट कनेक्शन तो ठीक है. कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम जिससे हम क्लास लेते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं, फैकल्टी भी कोशिश करती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए. बाकी टेक्निकल टीम भी सपोर्ट करती है हमको. बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का है उसमें स्लोनेस आ जाती है, उसकी वजह से क्लास रुक रुक के चल रही है शायद. ओके ओके सर, जो मटेरियल वेबसाइट पे है, हाँ वही है हार्ड कॉपी में. जो SOL की वेबसाइट पे आपको मटेरियल दिया गया है वही हार्ड कॉपी में भी है, जो आपको अगर प्रोवाइड होता है तो. ड्यू टू कोविड हो सकता है अभी तक नहीं मिला हो आप लोगों को. एग्जाम के मोड के लिए काइंडली आस्क टू एडमिन. एडमिन से आपको पूछना पड़ेगा. ओके तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. इट विल टेक, थोड़ा सा टाइम लेगा स्लाइड शेयर होने में, क्योंकि लिटिल बिट सर्वर एरर, आई डोंट नो कौन सा एरर आ रहा है. ओके सपना, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली जो आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज है या कुछ और है, वो आपको एडमिन ही बता पाएंगे कि किस मोड में होगा, ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा. ठीक है, कोर्स से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं. जैसे इराक बलूचा की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उसमें पूरा आपको सिलेबस कवर हो जाएगा. इराक बलूचा की बुक के अलावा आपको स्टडी मटेरियल SOL की वेबसाइट पे दिया है. जस्ट गो थ्रू द SOL वेबसाइट, यू कैन इजिली फाइंड आउट स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, एंड दैट स्टडी मटेरियल कवर्स फुल सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करता है. ठीक है, ओके
ओके आपको राइट, हाँ आपके सिलेबस को ही आपको कवर करना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। एनोनिमस जो भी है, सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है। आपको केवल 7 यूनिट्स में से जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली बुक में देख के आपको पढ़ना है। तो ये था हमारा, मैं स्लाइड को शो कर रहा हूँ, इन बिटवीन में बताते चल रहा हूँ ओनली। आपको इन्वायरमेंट, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द environmental pollution chapter. This is unit 5th. So we discuss about the pollution and definition of pollution and what kind of pollutants are available into the atmosphere. Okay. And different sources of pollution, उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं पोल्यूशन के। वन इज एंथ्रोपोजेनिक, अदर इज नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड। ओके, सो एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, एयर वाटर सॉइल, जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में बात हुआ। एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉजेस दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कौन कौन से कॉजेस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके सोर्सेस क्या क्या है। स्टूडेंट्स प्लीज वेट, मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। गेटिंग सम स्टूडेंट्स प्लीज वेट करिएगा, स्लाइड शेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। राजपाल सर अगर आप सुन रहे हैं सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, स्लाइड शेयर सर फिर से इशू आ रहा है थोड़ा सा। सर सुन पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तो कुछ भी कनेक्टिविटी दिक्कत नहीं आ रही। सर भाई मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना, इनका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ना, तो वो वहाँ पे सफल कर रहा है, मतलब घूम रहा है, और वो इमीडिएटली आ नहीं रहा, आ रहा है लेकिन बहुत स्लोली आ रहा है। और बच्चे भी, हाँ सर मे बी सर कुछ इंटरनेट की ही प्रॉब्लम है या क्या है, नेट तो सही है बट मे बी माइक्रोसॉफ्ट का जो सर टेम है सॉफ्टवेयर शायद उसमें कुछ, क्योंकि बच्चे भी सर थोड़ा सा कंप्लेन आ रहा है उनका कि सर रुक रुक के स्लाइड ओपन हो रही है। पर यहाँ से कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ से हो सकता है सर। नहीं सर मेरी तरफ से तो इशू नहीं होगा सर, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी तो मेरी अच्छी है, आपकी भी आवाज जा रही है, मेरी भी आवाज आ रही है। और लास्ट क्लासेस में नहीं था, बट आज जब से मैं क्लास ले रहा हूँ सर, ये पिछली क्लास में भी इशू आया था। हो सकता है सर। क्योंकि सर क्लिक मैं ट्राई कर रहा था, थोड़ा टाइम कर देता हूँ, इसको एक बार चेक करें। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपको बोलता जा रहा हूँ, तब तक स्लाइड शो जब तक हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ और क्वेश्चन आंसर आए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन क्या है? ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज बेसिकली एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे वाटर को अफेक्ट करता है एंड वाटर की लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है, जो हमारा वेटलैंड है या हमारा मैराइन इकोसिस्टम है या हमारा वेटलैंड है या वाटर से रिलेटेड कोई भी इकोसिस्टम है, उसको जो अफेक्ट करता है एनी अनडिजायरेबल चेंज, वो हमारा वाटर पोल्यूशन में आता है। ओके, लेट मी शो द स्लाइड। Okay, so there are basically two kind of sources available, same as air pollution. One is natural and another is anthropogenic. ठीक है, where the fraction of anthropogenic pollutants are much more in comparison to natural sources. Okay, and the effect of natural sources are very few. Okay, फिर how we characterize the water pollutants? We can characterize water pollutants into two different types.
First is primary, another is secondary. Primary pollutants are directly emitted to the source. हाँ, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ. एक्चुअली अभी स्लाइड शो नहीं हो पा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए. जैसे ही स्लाइड शो होगा मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है. So primary pollutants are pollutants emitted directly from the source, and secondary, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में या वाटर हाइड्रोस्फीयर में जा करके वहां पे रिएक्शन करके दूसरे पोल्यूटेंट्स का फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाता है. ठीक है. अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट. वेट, आई एम ट्राइंग टू शो द स्लाइड्स. Wait students, okay. Okay, अगर हम टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स आर अवेलेबल हियर. Yes, I am trying to show the slide. Okay, अगर हम कैरेक्टराइज करेंगे वाटर पोल्यूशन को, हाउ दे आर अफेक्टिंग आवर हाइड्रोस्फीयर, तो हम बोल सकते हैं एक तो होता है सरफेस वाटर पोल्यूशन, एक होता है सरफेस वाटर पोल्यूशन, सेकंड है हमारा मैराइन वाटर पोल्यूशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड इज अवर ground water pollution. Okay, surface water pollution, second is marine water pollution, and third is groundwater pollution. The pollution in the earth surface or on the water surface is called as a surface water. Pollutants affecting रिवर इकोसिस्टम को जो अफेक्ट करेगा वो हो गया सरफेस वाटर पोल्यूशन में आएगा. पॉन्ड इकोसिस्टम को जो अफेक्ट करेगा वो भी हमारा वो भी हमारा सरफेस वाटर पोल्यूटेंट्स में आएगा, पोल्यूशन में आएगा. जब हम मैराइन वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे, द पोल्यूटेंट्स अफेक्टिंग marine water is called as a marine water pollution. उसके बाद क्या आता है हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर. बहुत सारा इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. वो भी फ्लोराइड कंसंट्रेशन अगर वाटर में एक्सेस हो जाता है तो वो हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है. तो इन सब से बचने के लिए there are so many criteria available. So हम ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को और मैराइन पोल्यूशन को और एक सरफेस वाटर पोल्यूशन को कैरेक्टराइज करने के बाद अगर हम इसको मेजरमेंट करना चाहें कि हाउ टू मेजर how much quantity of water is polluted, so there are some techniques available by which can measure the water quality. First, sampling. We have to do the sampling. हम किसी भी जगह पे कोई भी चीज का पैरामीटर लेते हैं, एयर, सॉइल, वाटर का. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. अभी स्लाइड ओपन नहीं हो पा रही है क्योंकि वो राउंड घूम रहा है. ठीक है, तो कुछ भी होता है वाटर में, तो सबसे पहले हम वाटर में या एयर में या सॉइल में, तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं.
just go in the side where for which water we want to take sample and किस पानी को हमको एनालाइज करना है. So just do the sampling. कुछ पानी को लाते हैं, फिर उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद मेजरमेंट करते हैं, फिर chemical biological testing करते हैं. So in chemical biological testing we basically use some of the parameters like TDS, total dissolved solid, COD, carbon oxygen demand, BOD, biological oxygen demand. Okay, अगर आप में से कोई नोट डाउन कर रहा है तो काइंडली नोट डाउन. These are the some chemical and biological parameters we basically check for the water quality index. That means what kind of water quality is there, and if the water quality is affected, then what to do. Okay. Okay, student, trying to open the slide again. I hope all of you are able to hear me. That's why you are questioning me. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Maybe due to some server error. Technical team is also trying to give best to us. ठीक है, काइंडली आप लोग अभी ऐसे ही समझिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं, पहले सैम्पलिंग करते हैं, फिजिकल टेस्टिंग करते हैं, बायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं. इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वाटर क्वालिटी का पैरामीटर क्या है. ओके, सो देयर आर सम हाउ टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. कैसे हम वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स को लेता हूँ. गंगा एक्शन प्लान को लिया गया. गंगा एक्शन प्लान बेसिकली डिफाइंस into 2 phases, Ganga Action Plan 1, Ganga Action Plan 2. इसमें क्या हुआ था कि in every city they proposed that there should be one STP, sewage treatment plant, and effluent treatment plant should be established in every city. उससे क्या होगा? The primary role of STP and ETP to collect all the domestic wastewater from the different sources of the city and to treat them in a primary, secondary, and tertiary method. There are some methods available with the STP and ETP. STP means sewage treatment plant, and what is the meaning of ETP? Effluent treatment plant. So these units, the basic role of these units are to collect the wastewater from different sources of city and to treat them as they can be used for the irrigation and maybe for the drinking purposes, etc. Okay, so this is the basic concept behind the ETP and STP. Second is on-site sanitation and safety managed sanitation. Okay, we use RO, we use UV. तो उधर पे क्या होता है, वाटर आता है, एक उसमें केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वाटर ट्रीट होता है, फिर हम उसको पीते हैं. तो ये हम कर सकते हैं. फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, CPCB have certain given some certain rules and regulation by which all the waste water generated every day from the industry should be treated. Okay, उसका वाटर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करना है. उस जितना भी दिन भर में किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट से एफ्लुएंट निकल रहा है उसको ट्रीट करना है, उसके बाद ही उसको आगे रिवर में या पॉन्ड में डालना है. तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. देन एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. वी नो दैट इन एवरी ईयर टू हमारा जो फील्ड होता है, फील्ड में फार्मर्स फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डालते हैं. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है कि वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारे फील्ड पे पड़ता है, और पड़ने के बाद फिर वहां पे कुछ तो सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड रिमेनिंग आर लेफ्ट इन द सॉइल, विल क्रिएट एसिड क्रिएट कर देता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एसिडिक एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी सॉइल को खराब कर देता है. ठीक है, देन आफ्टर कोरोजन, मेटल सरफेस कहीं कहीं पे कोरोजन क्रिएट कर देता है. ओके, उसके बाद और वाटर में वेट ओके, उसके बाद सम ऑफ द ऑयल, जैसे ऑयल स्पिलेस का भी कॉन्सेप्ट आया है. ठीक है, जो ऑयल
हमारे शिप मूवमेंट से निकलता है, जो पानी वाली शिप्स होती हैं उनके मूवमेंट से जो ऑयल निकलता है वो भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारे मैराइन वाटर को। ओके, देन आफ्टर डोमेस्टिक सीवेज के बाद इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की बात करेंगे। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज दैट आर कॉल्ड एज industrial effluent. Okay, basically industrial wastewater usually contain specific and readily identifiable chemical compounds. Okay, mainly in the form of toxic waste or in form of organic pollutants. For example, we can take example of chromium, mercury, lead, copper, cadmium. These are the pollutants, water pollutants, which are emitted directly from the industrial effluents. Okay. Synthetic detergents and oils. Some of the synthetic detergents and oils are there, which are also affecting our water ecosystem. These are generated from the okay, and basically toxic to fishes and aquatic life. As oceans are polluted on daily basis from oil spills, routine shipping, runoff, and dumping, etc. Okay. Agricultural runoff that I discussed before some time. That runoff adds nitrogen and phosphorus to water. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को वाटर में ऐड कर देता है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें कि हाउ टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट काइंड ऑफ sources we can use. Basically, if we talk about the groundwater pollution, more than 40 states of 40 states of India is affecting from the groundwater pollution. Maximum Andhra Pradesh, Assam, Bihar, they are affecting much more. उधर पे आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है। फ्लोराइड पॉइजनिंग से क्या होता है, उसमें क्या होता है, टीथ हमारे डिके करने लगते हैं, बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, फ्लोराइड पॉइजनिंग बेसिकली पाई जाती है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। यहाँ पे फ्लोराइड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है। Okay, some of other estimates find that 65% of India's villages are exposed to fluoride risks. That means 65% of India's villages, जितने भी इंडिया में विलेज हैं उसमें 65% ऐसे विलेज हैं जो कि फ्लोराइड रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, let me check your questions. Let me try to take your question, students. ठीक है, फिर हम फ्लोराइड पॉइजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करना है जिसमें फ्लोराइड पॉइजनिंग, जैसे इंडिया में जो फ्लोराइड पॉइजनिंग का एक परमिसिबल लिमिट है वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वो है 1.5 ppm, जबकि उससे ज्यादा इंडिया के 14 स्टेट्स में उससे ज्यादा फ्लोराइड पॉइजनिंग मिलती है एवरी ईयर। ठीक है, A recent survey by the IWMI in North India showed 42% of the people covered in the samples survey were affected by the fluoride poisoning. Fluoride poisoning causes depression in DNA and RNA synthesis also. मतलब वो हमारे जीन पे इफेक्ट डाल देता है। Conditions including aging, cancer and arteriolysis are associated with DNA damage and its disappear. बहुत कुछ होता है फ्लोराइड पॉइजनिंग या वाटर पोल्यूशन के साथ अफेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं आर्सेनिक पोल्यूशन की। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है? हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक अबव द परमिसिबल लिमिट। कितना परमिसिबल
limit है 15 parts per billion ppb are found in the basically Ganga's plains covering 6 districts of the West Bengal. वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आर्सेनिक के साथ उसके साथ साथ फ्लोराइड के साथ साथ arsenic contamination of drinking water causes a disease called arseniocosis for which there is no effective treatment method available in India. आर्सेनिक प्रॉब्लम के लिए अभी भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट मेथड्स. ओके, आर्सेनिक प्रॉब्लम में क्या होता है, बॉडी पे स्पॉट पड़ जाते हैं, हैंड में, बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट एबल टू ओपन द स्लाइड्स. I don't know why this is happening. I will try to sort out it. ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा और मैं क्लास को लूंगा आपकी कि आर्सेनिक फ्लोराइड पॉइजनिंग में और क्या क्या होता है. जो इफेक्ट बेसिकली फ्लोराइड पॉइजनिंग में होता है वो होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो होता है वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यूट्रोफिकेशन, पैथोजन स्प्रेडिंग डिजीजेस, बायोमैग्निफिकेशन, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज. आई होप आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी. ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्लास. थोड़ा सा और
हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन कीजिए अपना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन कीजिए। आपका सर माइक ऑफ है। हाँ, ठीक है, हो गया तो। सर आपका माइक फिर ऑफ हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है।